Ajit, hi, congratulations on I'm converting IIM Ahmedabad, bro. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. How does it feel? It feels great, sir. It's great. No words to describe my situation right now. क्या परसेंटाइल है बेटा आपका? 98 है, sir. एंड इज दैट अ जनरल कैटेगरी और अपना रिजर्वेशन? ST, reserved ST category. नॉट अ प्रॉब्लम मैन, उसके लिए भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परसेंटाइल है ना? सो आई थिंक kudos to you, 98 percentile is a good number. Thank you, sir. Thanks a lot. Actually, the preparation I started just a month before CAT exam, sir. Oh. And I did not have much of confidence after CAT exam, and due to these mocks and all, it really boosted my confidence and it helped me a lot. Nice. I'm glad So to know that. I'm grateful for all the support you guys have given, and it has been a great experience, sir. And today I'm really very happy. नहीं यार, तुम लोगों के एफर्ट्स होते हैं, हम लोग एज अ मेंटर तो मतलब ठीक है, वी आर देयर, वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट आई थिंक फाइनली जो जंग लड़नी होती है वो आप लोगों को ही लड़नी होती है. Yes, sir. Actually एफर्ट्स है, लेकिन सर उनमें उस एफर्ट को मतलब राइट डायरेक्शन में दिखाने के लिए सही था. इट मीन्स अ लॉट मैन, इट मीन्स अ लॉट. आई वुड लव टू आस्क यू, जैसे मैंने शैनदीप को भी पूछा था, बहुत सारे बच्चे हैं ओपन कैटेगरी के, रिजर्वेशन कैटेगरी के, what piece of advice you would like to give them जो अभी फिलहाल जिनका CAT 2024 आने वाला है? 2024 from my side it would be focus on mocks and keep improving based on those results. कितने मॉक्स दिए तूने तेरे टाइम पे? एग्जाम के टाइम पे या इंटरव्यूज के टाइम पे सर? एग्जाम के टाइम पे एंड इंटरव्यूज के टाइम पे भी. एग्जाम्स के टाइम पे सर विद इन दोज 1 month आई यूज्ड टू गिव एवरी मॉक विद इन 3 days, लाइक 10 odd मॉक्स दिए थे सर मैंने. As I was from NIT background and engineering background, so quant वगैरह में प्रॉब्लम नहीं था. VARC में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस LRDI में थोड़ा प्रॉब्लम था. वो जो भी मैंने स्कोर किया बस उसी मॉक्स के बेसिस पे स्कोर किया. तो okay, क्योंकि so you are an मॉक्स engineer देने की वजह से I was exposed to a lot of sets in LRDI due to those mocks. Yeah. And you are an engineer and you're from NIT? Yeah sir, NIT Jaipur. Oh, that's nice. That's nice. And any kind of work ex है आपको या फिर आप? No sir, no, fresher. You're a fresher? Yes sir. Holy shit! 1 month का preparation and 98 percentile. By the way, I'm recording this for YouTube and you know, मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को कि जज मत करना भाई, एक महीने में 98 percentile फोड़ा है, is not a joke. Yes sir. And how was your GDPI preparation? I hope C2C was helpful during your journey. It was great. I got a lot of help from C2C sir actually. Thank you. Exposure to different classes, different people and their experiences. I got to learn a lot from their experiences, from their point of view. Thanks Ajit, means a lot. I wish you all the very best. Yeah. So C2C gave me a platform where I was exposed to different scenarios, like this might happen or this might happen, this might go wrong. So I got prepared in various aspects, and you took a mock for me in the starting itself. Oh, is it? And yeah, it kind of helped me a lot for my preparation, and it gave me a lot of time for improvement on those aspects. Fantastic. Like you just took a mock just casually, and you were like, मैंने तो मतलब तुम्हें ज्यादा ग्रिल भी नहीं किया, लेकिन भी तुम्हें इन पॉइंट्स पे इम्प्रूव करना चाहिए. Nice. अगर तुम इम्प्रूव कर लेते हो. फिर लास्ट में अहमदाबाद से पहले मेरा आपने ईशा मैम से इंटरव्यू करवाया था. Right. So she was like, yeah, you are performing well, you have improved. So yeah, you can. So overall, my journey has been like mainly confidence improve और aspects. नहीं यार, जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है. You gonna be my junior, you gonna be Isha's junior, and we gonna help you to sail through IIM Ahmedabad का रीगर also. Don't worry about that. Now तेरी लाइफ एक्चुअली अभी चालू हुई है. Yes sir, thank you sir. Cool है यार. I'm happy. A lot of kids have converted, and now I remember. अभी जब तूने बात करा तो मुझे याद आया. Yes, I took your interview. I think वो operations management and PMP program, वो जो questions मैंने तुझे पूछे थे, I think you are the same guy. Yeah. I remember your mock. I remember. Yes, sir. Cool है यार. So you got 98 percentile in 1 month का preparation. Can you give some idea कि यार 2024 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अभी इनके पास तो 8 महीना है,
एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड कि भाई इज इट डूएबल, इज इट पॉसिबल कैट, या फिर कैट बहुत डिफिकल्ट है? क्या बताना चाहेगा बच्चों को कैट के लिए? गाइडेंस सर, गाइडेंस करेक्ट टाइम पे सही गाइडेंस मिल गया तो इट्स रियली डूएबल. इट वोंट बी And would you recommend C2C for them as far as guidance is concerned? Yes, sir. I would recommend them C2C because it has helped me to get a seat in IIM AA. So I would definitely recommend. Yeah. Perfect. Yes. Super duper happy to know that you've converted. Now the next target will be हम profile पे काम करेंगे. We'll have Yes, to sir. meet a lot of alumni and we'll get started with the preparation. जो तेरा अभी induction वगैरह होगा अहमदाबाद में. I cannot disclose that right now, but yes, Okay. we'll get started with that. And wish you all the very best, Ajit. I'm gonna soon call you for a Zoom session, and I want you to connect to my kids 2024 वाले cat के, and I would love to have as a mentor also. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Thanks. चलो have fun, enjoy Thanks, MI versus CSK, and we'll meet up soon. Yes. Thank you, sir. Take care, man. Take care. Bye bye. God bless Thank you. you, sir. Bye bye. Thank you. All right. Another convert from C2C Mentors. IIM Ahmedabad. एक महीने में बंदे ने 98 परसेंटाइल फोड़ा है. देखो कैट है ना, मैं ऑलवेज कहता हूँ इज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी. आई अंडरस्टैंड उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, ही इज एन एनआईटी का है, ही मस्ट बी प्रीटी स्मार्ट, बट यार एक महीने में 98 परसेंटाइल इज अ वेरी गुड थिंग. डेफिनेटली कैटेगरी है, बट यू नो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज 98 परसेंटाइल कैटेगरी एंड देन IIM अहमदाबाद कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी हैव सीन पीपल गेटिंग रिजेक्टेड इवन एट अ वेरी हाई परसेंटाइल. सो गाइज देखो, कैट इज डूएबल, इट्स पॉसिबल. आपके पास 7-7.5 महीने अभी भी बाकी है. You need right set of guidance. I think मेहनत हर एक बच्चा करता है. You know syllabus, you know stuff, you know तुम्हें पता है क्या आना चाहिए. You know all that stuff, right? You know your strength, you know your weaknesses very well. Mocks भी देना है, ये सब लोग कहते हैं. But I think what differentiates us is wherein the guidance comes into picture. So यार अगर आपको कैट निकालना है या फिर अगर आपको कॉलेजेस क्रैक करने हैं, GDP वगैरह सब हम देख लेंगे. मेक श्योर आप हमारे साथ कैट का प्रिपरेशन करो या फिर किसी के भी साथ कैट का प्रिपरेशन करो. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गाइडेंस जो मिलता है वो रियलिस्टिक मिलना चाहिए, है ना. मोटिवेशन के चलते कुछ भी उठ पटांग चीजें फॉलो मत करना, मेहनत करते रहना. रिगर तो होता है, बट अगर आप मेहनत करोगे अगले साल यू विल बी वन ऑफ द स्टूडेंट who will be recording this video with me, and we would love to have maximum students in IIM Ahmedabad from C2C Mentors. I wish you all the very best. जो बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, if this is a motivation for you, kindly put a comment and I'll see you the other side. Take care of yourself guys and bye bye.